Okay, we are live. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all session of our webinar series being conducted as part of the Digital Awareness and Legal Education Department of the Youth Journalism and Legal Forum. I'm Hania Rifat, the founder and director of Youth Journalism and Legal Forum, and I'm pleased to have with me Barrister Sana Pirzada, who is the founder of the Virtual Legal Advisory, and Barrister Khadija Siddiqui, who is a human rights lawyer. And with both of them, we would be delving into the law on honor killings and discussing the case of Qandeel Baloch. Barrister Sana, I would like to start with you. Thank you so much, madam, for your time. So, just like to discuss this topic of honor killings generally, why do you think that in Pakistan and in South Asian societies, honor killing is such a big issue? Hania, firstly, thank you so much for inviting me as a panelist as part of your platform. And I am truly humbled to actually be here and talk about something which is extremely sensitive and something which really needs to be discussed, especially at present, given the recent developments in the Qandeel Baloch case. I would like to say at the very outset, and I will go back to your question in just one moment, that when in any given society, when we look at the legal system and especially at the judicial system, the judiciary of every given society should be setting a precedent, should be setting an example for others in the society in terms of prohibiting certain behaviors which are both either immoral or illegal. And what we've been seeing in Pakistan, given the spate of gender based violence cases in general, I'll talk about honor killings more specifically in just a moment. But when we look at the recent spate of gender based violence cases in Pakistan and the judiciary's approach towards those cases, it's very unfortunate that in general, the outcome of those cases has been quite negative to the extent that the message that is being conveyed to people is that you can get away with criminal behavior and at times you can get away with something as heinous as murder, as we have seen recently coming to the Qandeel case. Now, sometimes, apart from the evidential issues and the legal issues, judges also need to take into account policy considerations. The interpretation of statutes in Pakistan is also a problem in terms of the judiciary because of probably the judiciary lacking that depth of interpreting statutes. And again, that is a different debate that I would not really want to go into, but these are some of the issues with regards to the judiciary in general in Pakistan. Now, when we talk about honor killings, I'll just briefly talk a little bit about that in the Pakistani context, and then talk a little bit about the law, and then leave the rest for Barrister Khatija Siddiqui to to shed light on. Now, with regards to honor killings, Human Rights Watch have actually sort of stated that there are about 1,000 reported cases of honor killings in the last couple of years, so around 1,000 per year since 2016 or 17. This figure may not necessarily be accurate because, as many people know, in Pakistan, a large number of cases are not reported. So there is a dilemma over there. Now, when you ask me why is honor killing such a problem in Pakistan, it all stems from the patriarchal infrastructure which exists in a number of societies. And when we talk about the Pakistani society, unfortunately, this mindset has existed here since the beginning of time. It all boils down to the idea of revenge or retaliation. Either you falsely accuse the woman of something that she hasn't done, and it could be because of a family feud, or it could be because of some inheritance issue, or if she is bold, such as the issue was in the Qandeel Baloch case, then you use that against her. And it all sort of boils down to restricting women's rights and their independence. And sort of the other reason why people have actually gotten away with this is because of the deficiencies in our legal and the judicial system, which is what Amnesty International highlighted in one of their reports as well. It's not a recent report, actually; it's a pretty old report.
that the authorities have failed in combating honor killings. And it's very unfortunate that the situation is still the same despite the developments and despite the evolution in our legal system. People are also aware of the jirga system in rural areas, but unfortunately, we can always say that that is something that's happening in the rural areas, but then when we look at the high courts as well of very urbanized areas, we are seeing similar outcomes there. So it's pretty the situation seems pretty bleak now. With regards to the law itself, I'd like to say that things have evolved to the extent that honor killing was first introduced in 1860 in the 1860 code. So this is pre-partition. And so it was introduced as a lenient sentence to be given to a man who murdered his wife for a grave and sudden provocation. Now, obviously, the sort of Shariat interpretation amended that definition. And if we finally, so I'm going to skip the different amendments that took place over a number of years. Eventually, if we sort of fast forward to the 2016 Criminal Law Amendment, Offences in the Name of Honor Act, and this is sort of side by side with the Qandeel Baloch murder. The 2016 law, to a large extent, sort of dealt with this loophole that allowed perpetrators to actually get away with honor killings and by giving blood money to a family member. The insertion of fasad fil arz, so taking into account the defendant's past conduct and a number of other circumstances, including the motive of honor killing, was a very significant amendment that was made. And to many, it actually appeared that this would be a revolutionary step in the right direction. And of course, he was then convicted. He confessed to murdering her. He also confessed that he did it because of her behavior or her photographs or the videos or whatever that were not deemed to be in accordance with probably the norms of their family or the norms of society, and the fact that he claimed that she brought disgrace to their family. Now, recently, of course, we've seen the High Court's judgment and the fact that the brother has been acquitted. And just briefly, I'm just going to briefly comment on that, and I did initially as well, that it's the judiciary's duty to be setting an example. And in this case, the Qandeel Baloch case has been such a prominent case that it sent shockwaves not only across Pakistan, but across the globe. And this news was highlighted by the BBC, by the CNN, by all sorts of forums, by all sorts of social media platforms. People spoke about it, and people generally were impressed with Pakistan's sort of democratic or progressive approach in terms of this 2016 law being passed and the brother being held accountable for a crime that he admitted to carry out. And now, when we eventually see, hear in the news that he has been acquitted because of certain evidential discrepancies, and also, and sorry, there is a direct quote that though he had murdered his sister due to pictures and videos, it still doesn't mean that the murder was done in the pretext of honor killing. At the end of the day, if a man is alleging that he has murdered his sister because of the disgrace that she brought, because of the pictures and videos, and then if you cannot classify that as an honor killing, it again brings into question the competency and the credibility of the judicial system. Of course, there are claims as well that the brother says that he was tortured into confessing. And again, that is something that I don't really want to comment on. But this is the situation that exists, and those people in general who were very satisfied with this decision and who were satisfied with Pakistan's progression in terms of the legal system, in terms of the judicial system, have sort of gone back in time, to an era where things were very grim. And I'll just pause over here because I think that Barrister Khatija might want to actually shed light further on the matter at hand. So if there's nothing else, Hania, I think I'll probably pause for now. All right, I think we lost Hania. Okay, so let's just continue. I can take over.
So I think I will continue from what Sana was actually dilating upon, and I think you raised some very, very serious questions pertaining to Qandeel Baloch's case, which is obviously very recent. तो इसीलिए I think better है कि हम इसी से start करें because इसी से हमारा पूरा law और structure और हमारा judicial जो oversight है on the current law वो हमें reveal होता है. तो Hania, you can take over now. Thank you so much, Ms. Sana, for giving us an elaborate account of the reasons why we have honor killings and briefly commenting on the law. So now with Barrister Khadija, thank you so much, madam, again for your time. I would like to begin with the first stage, the police investigations. At the end of the day, आपको पता है कि वो judiciary के अंदर ये बड़ी चीज़ होती है कि evidence collection ठीक नहीं हुई थी. So could you please briefly comment on the role of the police and the prosecution when it comes to honor killing crimes जो उनकी initial stages से शुरू होते हैं, the investigation by the police and then the prosecution. So could you briefly comment कि क्या status है इस वक्त? Is it like satisfactory? What are the issues? हानिया ऑब्वियसली हमारे जो सिस्टम है इनहेरेंटली हमारा पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रोसिक्यूशन जब हम बात करते हैं पुलिस की तो हमारी एविडेंस कलेक्शन की बात आ जाती है उसमें हमारा अगर कंदील के केस में देख ले तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था और बड़ा इंक्रिमिनेटरी ऐसा एविडेंस कलेक्ट किया 35 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने जो है वो प्रेजेंट किए बिफोर द ट्रायल कोर्ट जिसके बाद कन्विक्शन जो है वो सिक्योर की गई तो हम ये नहीं कह सकते कि एविडेंस जो है वो लैकिंग था अगर इस केस की बात करें लेकिन दूसरे केसेस में यस देयर आर लूपहोल्स जो रह जाते हैं जो फर्दर बेनिफिट देते हैं लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉब्लम इन ऑनर किलिंग क्राइम्स हमारा बेसिक बुनियादी जो मसला है ऑनर किलिंग्स के साथ वो हमारा कानून है कानून होने के बावजूद एक्विटल्स हो जाते हैं ये मसला है क्योंकि अभी हम रिसेंटली अगर देखते हैं तो एक ऐसा इंसिडेंट एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और शॉक वेव्स पूरी दुनिया में आई थिंक एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एक सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी अमंग्स द वुमेन हमारे अंदर आई कि ये किस तरह एक लड़की जिसको जजमेंट के अंदर बार बार सेलिब्रिटी के तौर पे टैग किया गया विच वाज एक्चुअली वेरी अपॉलिंग फॉर मी क्योंकि जब मैंने ये देखा कि उसको एक जेंडर बेस्ड वायलेंस या उसको एक ऑनर किलिंग की तरह नहीं देखा जा रहा उसको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जो जजमेंट है जो ऑनरेबल कोर्ट ने दी वो स्टार्ट ही ऐसे होती है कि सेलिब्रिटी किलिंग्स एंड एक टीन वोग का आर्टिकल साइट किया गया और बड़ी जो है ना उस तरह की बात की गई कि शायद एक अगर सेलिब्रिटी है तो क्या वो इक्वल प्रोटेक्शन टुवर्ड्स लॉस की तरफ नहीं है आर्टिकल 25 उसको अप्लाई नहीं होता या फिर हमारी कोई डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेलिब्रिटीज के साथ तो वो थोड़ा सा जो है ना शॉकिंग था मेरे लिए उसके बाद जब हम ऐसे केसेस देखते हैं तो हमारा कानून जो है वो पहले अगर हम देखें 2016 से पहले और 2016 के बाद 2004 में एक अमेंडमेंट आई 2016 में फिर अमेंडमेंट आई जब बात होती है ऑनर किलिंग्स की तो 2016 में बड़ा क्लियरली उन्होंने इसको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कर दिया लेकिन साथ ही साथ उन्होंने डिस्क्रेशन दे दी जज को तो जो ये डिस्क्रेशन थी वो कंपाउंड करने के लिए और वेवर के लिए काफी थी कि केसेस को किसी तरीके से क्विट कर दिया जाए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके तो इसमें हुआ ये कि अगर तो अब 2016 के अमेंडमेंट के बाद अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि केस जो है वो ऑनर किलिंग के गार्ड से निकल आता है तो फिर उसमें कंपाउंड हो गया और वेवर मिल गया लेकिन अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि ऑनर किलिंग है तो फिर मैंडेटरी सेंटेंस है 25 ईयर्स की अब इसमें होता क्या है कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग द जजमेंट इसको गार्ब ऑफ ऑनर किलिंग से निकाल दिया कि स्पेसिफिकली प्लीड नहीं किया गया था तो इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 311 जो अब हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो डायलेट अपॉन करे कि फर्स्टली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली एज ऑनर किलिंग क्योंकि ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है ये क्लियरली हमें किसी भी जजमेंट में नहीं पता चलता ये क्लियरली हमें किसी भी कानून में नहीं पता चलता कि ऑनर किलिंग है क्या हम 311 पढ़ते हैं तो उसमें आता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अगर वेवर हो जाता है अगर कंपाउंडिंग हो जाता है उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है कि कोर्ट फिर भी डिस्क्रेशन है उसके पास कि वो सजा देगी 25 ईयर्स की तो ये फिर भी वो लूपहोल एक छोड़ देता है कि डिस्क्रेशन आ जाती है कोर्ट के पास तो ये डिस्क्रेशन कौन सा जज कैसे एक्सरसाइज करता है कितनी सेंसिटाइजेशन के साथ एक्सरसाइज करता है ये हमारे लिए असल इशू है Great. That brings me to my next question. You've rightly mentioned that there's judicial discretion. अब आप
मुझे ये बताएं कि आप, बिकॉज यूर अ लिटिगेटर, आप ओवरऑल हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी देखती हैं? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सेंसिटाइजेशन इन आवर कोर्ट्स? देखिए, इनहेरेंटली तो हमारे पूरी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की तो है। और जब हम स्पेशली जजमेंट्स भी देखते हैं तो वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर आता है, वो मिसोजिनी का, वो पेट्रियार्की का, वो बड़ी वाजे तौर पे जो है वो नजर आती है। लेकिन जहां तक बात आ जाती है सेंसिटाइजेशन की, वो हमारी पुलिस टाइम से स्टार्ट होती है, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एक समझ लें एक रेप के केस में, एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, जब एक फीमेल नहीं होगी और मेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभी भी, लेकिन वो हो रहा है, अभी भी वो अनकंफर्टेबल होती हैं डिटेल्स रिवील करने के लिए या कोर्ट, इवन पुलिस के पास जाने के लिए, और पुलिस जो है वो विलिंग नहीं होती कि वो आके विक्टिम के पास आके उसका अकाउंट ले सके और एविडेंस वहां से कलेक्ट कर सके, वो नहीं होता। तो मुझे लगता है मेन हमारा जो मसला है वो इधर से ही स्टार्ट हो जाता है, और फिर आगे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो हमें जुडिशियल डिसीजंस में भी नजर आता है कि किस हद तक जो है वो विलिंग हैं विक्टिम सेंट्रिक और विक्टिम सेंट्रिक जजमेंट्स देने के लिए। वो अभी तक जो है वो इतना नहीं है। हमारे जो जजमेंट्स हैं वो बड़ी मिक्सचर है, एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को यूज होता है अभी भी होता है, वेरी अनफॉर्चुनेटली, एज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के सजा कम दी जाए। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इवन दो जो लेटेस्ट कानून है उसने बड़ा क्लियरली ऑनर किलिंग को इससे बाइफरकेट कर दिया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आप प्ली नहीं ले सकते, इसमें 302 सी में सजा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये अभी भी एज ए डिफेंस यूज होता है। तो इस चीज से हमारा कोई वो नहीं है कि अगर एक फीमेल के साथ एक ऐसा घिनौना इंसिडेंट होता है तो क्या हमारी कोर्ट्स जो हैं वो विलिंग हैं कि वो उस लेवल तक फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देख के सजाएं जो हैं वो अपहोल्ड करें। अगर एक इतने बड़े केस में ऐसे होता है तो फिर आई थिंक ये बड़ा एक अलमिया है हमारे सिस्टम का, जिसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कंदील बलोच का केस एक प्रेसिडेंट केस बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इसको डायलेट करें कि क्या है, अगर ये नहीं है कंदील बलोच का केस ऑनर किलिंग तो फिर क्या है, हमें बताया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट इस चीज पे बिल्कुल साइलेंट है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज स्पेसिफिकली प्ली नहीं किया उसने अपने, क्योंकि देखें अगर हम अग्री करते हैं सम टू सम एक्सटेंट एट व्हाट द ऑनरेबल जस्टिस सेड कि भाई उसने स्पेसिफिकली प्ली नहीं किया, एट वन ऑन वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर सेइंग कि जी मैं इसको जो ये कन्फेशन थी इसको मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि ये फॉलो प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ। पर उसी उसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में आप कह रहे हैं कि जी ये उसने स्पेसिफिकली प्ली नहीं किया, और उसी जुडिशियल कन्फेशन पे आप रिलाई करके ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जी ये तो उसने कहा ही नहीं था कि मैंने ऑनर की वजह से किया, जबकि उसने बड़ी स्पेसिफिकली बोला कि मैंने पिक्चर्स वीडियोस की वजह से जो है ये मर्डर किया। तो आई थिंक वो ये एक ब्रीदिंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ वाली चीज आ जाती है इसमें कि इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया कि अगर हम निकाल भी देते हैं जुडिशियल कन्फेशन को, वी डोंट टॉक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, बट वी हैव सफिशिएंट एविडेंस, वी हैड 35 विटनेसेस जिसके अंदर हमारा मेडिकल एविडेंस आया, जिसमें हमारी सीडीआरस आई, जिसमें हमारा फोरेंसिक एविडेंस आया, जिसमें हमारी बहुत सी ऐसी एविडेंस आई जो कि रिकॉर्ड पे है मौजूद, लेकिन उसके बारे में हाई कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल साइलेंट है। तो मुझे लगता है इस चीज के ऊपर डायलेट अपॉन करना पड़ेगा कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और क्या 311 इसीलिए नहीं आया था कि जब वेवर और कंपाउंडिंग हो जाती है तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये होगा कि सजा 311 में दी जाएगी, क्योंकि लीगल हेड्स ने तो कंपाउंड कर दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, ये उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है। अगर इसी को बाईपास करना है तो इस कानून का फायदा क्या हुआ? खतीजा, आपने बहुत राइटली यू मेंशन कि क्या क्या इस वक्त इस जजमेंट के अंदर व्हाट आर द लूप, what is absent. But again, जब the news came that Qandeel Baloch, something that was so obvious and evident in a layman's perspective, there had been a brutal murder. The people actually want to know, and this was a discussion we were also having in one of our groups, that we want to know what exactly happened in the High Court and now what is the basis for the appeal in the Supreme Court. तो आप वो थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दें कि हाई कोर्ट ने इस वक्त पूरी प्रॉपर जजमेंट क्या दी है, सो लाइक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट, एंड जो आपने सुप्रीम कोर्ट में अब पिटिशन किया है उसके बेसिस क्या है?
ओके, सो बेसिकली हाई कोर्ट की जजमेंट पे अगर हम करते हैं, कुछ ऑब्वियसली भी मैटर इज सब जुडिस, और हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि भाई जब मैटर सब जुडिस हो तो इतने मेरिट्स में डीपली नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि द जजमेंट इज आउट फॉर द पब्लिक और सबने पढ़ी है, सबने देखी है, तो मैं मेरे सामने भी अभी ये जजमेंट है और इस पे मैंने अपने नोट्स जिस दिन आई थी उसी दिन प्रिंट करके, तो एक जो है ना अपना एग्रेशन एक तरीके से निकाला था कि किस तरह ये जजमेंट जो है वो इसमें कुछ चीजें जो थोड़ी सी शॉकिंग भी थी, लीगली मुझे लगा कि थोड़ी सी डेफिशिएंट थी, उसको करेक्ट करने के लिए आई थिंक हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सबसे पहली चीज जो है वो इस जजमेंट में ऑनरेबल जज ने डायलेट अपॉन किया कि सेलिब्रिटी डेथ किस तरह मैटर करती है हमारी सोसाइटी में, जिसका मुझे लगा कि कोई नेक्सस जो है वो इस इंसिडेंट के साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप उसको प्रोसिक्यूशन केस के साथ कैसे रेलिवेंट कर रहे हो, या तो आप इसको इस चीज की तरफ कनेक्ट कर रहे हो कि हाँ चूंकि वो एक सेलिब्रिटी थी और वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव थी जिसकी वजह से उसके भाई ने प्री मेडिटेट करके उसका मर्डर किया, मेक सेंस। लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, आपको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, लिखा हुआ है सेलिब्रिटीज कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ डेली लाइफ, दे प्रोवाइड अस विद laughs, comfort, entertainment, excitement, or a sense of escape. When a celeb we feel connected to passes away, it can feel like losing someone close to us because they may have been an integral part in some of our happiest or saddest moments. They made us laugh, they made us cry, but most importantly, they helped us forget about our difficult moments when we needed it most. तो मुझे थोड़ा सा जो है ना ये लगा कि even though she was a celebrity, but I think keeping that aside, she was a human being, which needs to be the foremost point of contention rather than being a celebrity. तो उसके बाद जो है एक टीन वोग का आर्टिकल साइट किया गया कि क्यों हम अफसुर्दा हो जाते हैं जब कोई सेलिब्रिटी पास अवे होता है। उसके बाद जी आ जाते हैं हम मेन केस के ऊपर। मेन केस के ऊपर बात होती है सबसे पहले हमारी रिट्रैक्टेड कन्फेशन के ऊपर। कन्फेशन रिट्रैक्ट हुई बड़ी लेटर स्टेज पे, लेकिन उस चीज को फौकियत नहीं दी गई, इवन दो अगर आप केस को देखें जो कि सबने देखा है कि किस तरह 16 जुलाई 2016 को ये इंसिडेंट होता है। 17 जुलाई की रात को ये जो अक्यूज्ड है ये अपने आप को खुद ही सरेंडर करता है। ये इसका वॉलेंटरी सरेंडर था, इसको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप जाएं और अपने आप को पुलिस के हवाले करें। ये खुद चल के पुलिस स्टेशन गया था और इसने कहा था मुझे पकड़ लो, विच अगेन शोज द फैक्ट कि इसको जो है वो अपने किए का इसको था कि मैंने किया तो मुझे इसकी किए की कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना कोई नदामत है, कर लें जो करना है। तो इसका सबसे पहला वो था। फिर इसकी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, विदाउट एनी डिले, 18 जुलाई को इसकी कन्फेशन आ जाती है, विच अगेन ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि अगर इतना ही टॉर्चर था तो एक दिन में कितना को पुलिस ने टॉर्चर कर लिया होगा। चलिए लेट लेट दैट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। लेकिन उसके बाद जो जजमेंट हमारी कहती है वो सारी की सारी बात करती है कि जो लोअर कोर्ट ने सजा दी वो इसलिए दी कि क्योंकि 311 अप्लाई होता था और 311 जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी गलत हुई। लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि उसकी एप्लीकेबिलिटी गलत क्यों हुई, क्यों उस वक्त कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं हुआ और क्यों सजा हो गई, जबकि बेसिस ही ये है कि कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट होता है और सजा दी जाती है क्योंकि नया कानून आया। तो उसके बाद हमारा आता है डीएनए, हमारी आती है फोरेंसिक्स, हमारा आता है मेडिकल, हमारा आता है सीडीआर। उसके बारे में कोई बात नहीं होती जजमेंट में। लेकिन जो फिर बात होती है कि रिकॉर्ड की बात होती है कि ये जो 345 के अंदर, सेक्शन 345 के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज है वो उस वक्त एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो लेटर इन स्टेज कभी एक्सेप्ट होगा। तो जो कॉम्प्रोमाइज है वो रूल आउट कर दिया था हमारे कानून ने, तो उसको उसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी मेरे ख्याल में इतना नहीं था, लेकिन इस जजमेंट में जो है वो हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी चूंकि वाल जो कंदील बलोच हैं उनकी वालदा भी प्रेजेंट हैं कोर्ट में और वो ये कह रही हैं कि ये हमने माफ कर दिया है तो इस केस में उसको बरी कर दिया जाए, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कन्फेशन। कन्फेशन जो है वो मेन इसका क्रक्स है कि किस तरह कन्फेशन ली गई और किस तरह वो सही तरीके से नहीं लेगी। उसमें दो तीन चीजें हैं जो ऑनरेबल कोर्ट फोकस करता है। पहला वो कहता है कि जब कन्फेशन ली गई थी
जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा कानून है, जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक़्त कन्फेशन होएगी, उस वक़्त सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, प्रोसीजर कंप्लीटली फॉलो होएगा, जो हैंडकफ्स हैं वो रिमूव किए जाएँगे, पुलिस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कोर्ट से, सारी चीज़ें मुकम्मल तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे और ये एविडेंट होना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर में। तो ये चीज़ जो है मुताबिक इसमें नहीं हुई थी। दूसरी चीज़ इसमें लिखी गई है कि जिस वक़्त कन्फेशन हुई थी, उसके बाद पुलिस कस्टडी में वापस दे दिया गया था, जिसको मुझे लगता है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पढ़ने के बाद बड़ा क्लियरली ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ ये कि अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस से हमने इस मुल्ज़िम को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये इसको हमने जुडिशियल रिमांड कर दिया है, व्हिच मीन्स कि पुलिस की कस्टडी से निकल के अब ये जेल चला गया, जुडिशियल रिमांड में चला गया। तो अगेन ये थोड़ी-सी मुझे लगता है मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस था, जो कि बड़ा एविडेंट है अगर हम ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पढ़ें और फिर जब हम हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें कि किस तरह इसमें um, जो जुडिशियल कन्फेशन थी वो रिट्रैक्ट की गई जब ट्रायल स्टार्ट हो गया, जिस वक़्त चार्ज फ्रेम हो रहा था, तब उसने कहा नॉट गिल्टी। तो ये कितने अरसे के बाद हो रहा है? 2016 में इंसिडेंट होता है, 2016 में ही कन्फेशन आती है, 2018 में जाके ये रिट्रैक्ट होता है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ डिले। बट इस चीज़ का कहीं ज़िक्र नहीं है कि ये क्या इतनी रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो है इसकी कोई अहमियत है या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतनी इंक्रिमिनेटिंग नहीं थी, इतनी ओवरवेलमिंगली ज़्यादा नहीं थी कि इसका एक्विटल जो है सिर्फ लीगैलिटीज और लीगल डेफिशिएंसीज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो उसको एक्विट कर दिया गया है। थोड़ा सा पैराग्राफ 19 जो है वो मैं पढ़ दूं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि द नो डाउट दैट इन द लास्ट लाइन ही गेव अ रीजन ऑफ मर्डर of his sister due to pictures and videos. But still, it does not mean that the murder was on the pretext of honor killing, as the same was not specifically pleaded by the appellant in his alleged confession. So firstly, it is being called an alleged confession, but at the same time, it is being relied on the confession कि उसने specifically plea नहीं किया था, which again थोड़ा सा हमें सुप्रीम कोर्ट की हेल्प की इसमें ज़रूरत है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी वेग हैं, थोड़ी सी अनक्लियर हैं कि अगर कन्फेशन को निकाल भी दिया जाता तो क्या इतना और एविडेंस नहीं था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेसिस पे, क्या चेन कंप्लीट नहीं होती हमारी, क्या नेक ऑफ द अक्यूज के साथ कनेक्ट नहीं करता ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाइल्ड किस्म का वो था, ग्रूसम मैं कहूँगी एक इंसिडेंट था, पूरी दुनिया ने विटनेस किया और उसका एंड ये हुआ जिससे मुझे लगता है कि एक किस्म का लाइसेंस ही मजीद मिल गया कि घर के अंदर चार दीवारी में घर वाले ही जिस तरह मर्जी चाहे मार दें, कोई गवाह नहीं होंगे, कोई विटनेसेस नहीं होंगे, एविडेंस तो सही तरीके से कलेक्ट होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें एक्विटल ही होगा एंड में, क्योंकि 311 की भी एप्लीकेबिलिटी मुझे लगता है इस जजमेंट के बाद बिल्कुल शायद नलिफाई हो गई। लेकिन आई एम रियली होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको मुकम्मल तरीके से हमें क्लैरिफाई करता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मुझे लगता है ये चीज़ लैकिंग है हमारे कानून में कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस का वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 311 में, जिसने कहा था कि मैंडेटरी 25 साल की सज़ा होएगी अगर कंपाउंड भी हो जाता है ऑफेंस, लेकिन प्रोवाइडेड वो ऑनर किलिंग हो। तो अगर यही लूप होल यूज़ करना है कि ऑनर किलिंग की गार्ड में से निकालना है, तो फिर किस तरह वो जो है रिलीफ मिलेगा, किस तरह विक्टिम को जस्टिस मिलेगा कभी भी। उसके बाद जो है एक और पॉइंट उन्होंने उठाया, मुझे लगता है बेसिकली जो मेन क्रक्स है पूरी जजमेंट का वो जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर बेस्ड है, जबकि जो एविडेंस है ट्रायल कोर्ट में वो कम्प्लीटली जुडिशियल वो कन्फेशन नहीं था, वो काफी ज्यादा एविडेंस था जिसके बारे में बात हुई थी, लेकिन उसके बारे में यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो अदर एविडेंस ऑफ कन्फेशन इज डिस्कार्डेड। एक दफा उन्होंने कहा कि जब एविडेंस ऑफ कन्फेशन डिस्कार्ड हो गया तो इसके अलावा फाइल पे कोई मटेरियल नहीं है जो कि एस्टैब्लिश कर सके कि ये जुर्म इसने किया। तो इसमें ऑनर किलिंग के गार्ड में से इसको बड़ी सेफली जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो वंस रिमूव हो जाता है ऑनर किलिंग के गार्ड से तो सेक्शन 311 फसाद बिल अर्ज का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होता और फिर उसके बाद एक्विटल की तरफ चले जाते हैं।
लेकिन प्राइवेट विटनेसेस इसमें बेशक रिजाइल कर गए थे, हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन जो फॉर्मल विटनेसेस हैं, जिनको हम कहते हैं पुलिस वाले, जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया था, जिन्होंने फोरेंसिक के पास लेकर गए थे, पूरी एक चेन ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश हुई थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे कनेक्टेड थे, और बड़ी डिटेल में ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जो है वो उसको क्लैरिफाई करती है कि किस तरह क्या क्या हुआ, और उसका चेन कंप्लीट हुई, जिसकी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर इसमें सजा हुई। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से चाहेंगे कि वो इसको करे, क्योंकि चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे ना हो, फिर उसके बाद एंड ऑफ द जजमेंट भी यही कहती है कि लेट जस्टिस बी डन। तो मुझे लगता है लेट जस्टिस बी डन की जगह अगर लेट जस्टिस बी बुचर्ड हो जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है सेलिब्रिटी रिलेटेड वायलेंस में, विच आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस, क्योंकि सेक्शन 311 में कहीं ये नहीं लिखा कि सेलिब्रिटी होगी तो ऐसी ट्रीटमेंट होगी, आम बंदा होएगा तो ऐसी ट्रीटमेंट होगी। तो prosecution must stand by itself. Essentially, accused need not establish his case beyond all reasonable doubt, except in the cases where burden relating to a fact and issue is on him. तो ये थोड़ा सा जो है ना credibility और reliability of the entire evidence के ऊपर बात की गई है। तो acquittal exactly इन्हीं चीजों के ऊपर हुआ है कि compromise जो है वो accept हुआ है, इवन दो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करने के बाद जो रीजंस दी गए हैं वो मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है। एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे लिए ये आसान कर देगी, कुछ ऐसा हमारे लिए यूनिफॉर्मिटी ले आए, ताकि जो जजमेंट्स के अंदर जिस तरह की डिस्पैरिटी है, एक जजमेंट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को बिलीव कर लेती है और उसमें सजा कम दे देती है एज एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ऑनर किलिंग है, इसमें हार्श पनिशमेंट होगी। सिंध हाई कोर्ट की अगर जजमेंट्स देख लें, बहुत हार्शर पनिशमेंट्स हैं उसमें, विच इज आई थिंक अप्रिशिएबल कि भाई वो एटलीस्ट एक स्टैंड, उनका प्रिंसिपल स्टैंड है इस चीज के ऊपर। यहाँ पंजाब में अगर हम देखें तो जरा लीनियंट वो है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, जल्दबाजी में, प्री मेडिटेटेड नहीं था, तो चलो इसको इस चीज का बेनिफिट दिया जाए। तो अगर हर केस के एंड में, स्पेशली रिलेटिंग टू फीमेल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसका बेनिफिट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे अक्यूज को मिल रहा है, परपेट्रेटर को मिल रहा है, इवन दो कानून एग्जिस्ट, तो आई थिंक वो थोड़ा सा हमें इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ब्रॉड करनी पड़ेगी, विक्टिम सेंट्रिक करनी पड़ेगी, ताकि जो खवातीन है वो एटलीस्ट सेफ फील करें। उनको ये ना हो कि अगर उनको दिन दहाड़े घर के अंदर कोई मार के चला जाए तो उनके केस का एंड ऐसे होगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। Thank you so much, Ms. Khadija, for giving us such an elaborate overview. But unfortunately, it was very painful to see certain reasoning that has been adopted by the and I'm sure that there's a lot of room for reform, especially in this area. So that brings me towards the final question for this session as well. You've gone through the judgment yourself and you've highlighted that where exactly are we falling short. So what do you think? We need legislative reform at this point. There has to be certain judicial sensitization. Where should reform come from? Should it be from the legislature? Should it be from the judiciary? Or in general, the society has to change the way it approaches gender-based crimes and especially honor crimes. So reform kahan se aana chahiye, and what kind of reform do you think would be the most apt? So I feel reform needs to be seen, and जिस तरह हमारे जुडिशरी को सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, जिस तरह अभी हमारी वेरी रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक was appointed the Supreme Court as a Supreme Court justice, इसी तरह अगर फीमेल जस्टिसेस हाई कोर्ट में भी उनकी तादाद ज़्यादा हो, उनकी परसेंटेज एक फीमेल हाई कोर्ट जज से बढ़ के एटलीस्ट 4 से 5 करंटली होनी चाहिए, ताकि थोड़ी सी जो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है वो हमें जजमेंट्स के थ्रू नजर आए। इवन दो मैं ये नहीं कह रही कि सारी बड़ी बायस्ड होती हैं या प्रेजुडिस्ड होती हैं, लेकिन उनमें एक स्ट्रीक आता है, और वो स्ट्रीक इसलिए आता है क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर जेंडर जो एक अग्रेशन है वो उसको वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है। और इवन अगर आप ऑनर किलिंग का अल्फाज ही देख लें, ऑनर किलिंग के साथ लगा देना इज द मेन इशू। क्यों आप ऑनर को किलिंग के साथ लगा रहे हो? क्राइम इज अ क्राइम एंड इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन द बिहाइंड द गार्ब ऑफ ऑनर।
और फिर उसको किस तरह जस्टिफाई किया जाता है, सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है, रिलीजन के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है। तो आई थिंक ये हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जुडिशरी से भी ऐसे फैसले आए, क्योंकि अगर हम खुद नहीं चेंज होने के लिए तैयार, अगर हमारे घरों में ऐसी तरबियत नहीं होगी जो इस चीज को निगेट करे कि नहीं, वायलेंस इज वायलेंस एंड इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे, तो तभी जो है वो चेंजेस आएंगी। एंड आई थिंक जब तक ज्यादा फीमेल्स, हमारी लॉयर्स ही हैं यहाँ पर, फीमेल लॉयर्स जब तक अपनी कोर्ट्स में आके स्पेस नहीं बनाएंगी, जब तक वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस नहीं करेंगी, तो आई थिंक क्रिमिनल में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है फॉर फीमेल लॉयर्स टू एक्चुअली कम इनटू लिटिगेशन। हम देखते हैं फीमेल लॉयर्स इवन तो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा लिटिगेशन की तरफ आए, क्योंकि फीमेल्स मोस्टली या तो टीचिंग की तरफ चली जाती हैं, विच इज अगेन देयर चॉइस, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमारी पेरेंट्स नहीं होगी कोर्ट में, हमारी स्पेस नहीं बनेगी, और हमें यही डर होगा कि शायद हम जाएंगे तो कुछ बुरा होएगा, हम जाएंगे नहीं, तभी उनको इतना बढ़ावा मिलता है कि मेल डोमिनेंस और जो मेल फ्रेटर्निटी है वो ही आगे रहे और फीमेल्स आगे ना आए। तो आई थिंक वो जरूरी है, हमें अपनी स्पेस खुद बनानी है। Hania, I would actually just like to add something over here. Firstly, thank you so much for for this invitation, and it was an absolute pleasure listening to Khatija actually, and it was very enlightening, all of the points that she covered. And hats off to you, Khatija. I just want to add a few more points. Ke, Hania, when you spoke of the sort of reforms ke legislative hone chahiye, judicial, and I think Khatija also rightly touched on this, कि अगर हम पुलिस को सबसे पहले देखें, एंड बहुत से वेबिनार्स में एंड इन जनरल मैंने भी ये बात की है कि सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लोग जो है वो पुलिस को अप्रोच करने में डर रहे होते हैं इसी वजह से, ख़ास तौर से अगर कोई फीमेल रिलेटेड इशू है, कोई जेंडर बेस्ड क्राइम है, एंड वहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटाइजेशन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर विद इन द पुलिसिंग फोर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशरी, मैंने आउटसेट पे कहा ही यही था कि judiciary itself is the sort of structure in society which is what everybody looks up to in any given society. और हमारे यहाँ जब judiciary का ही हाल ये है कि इस तरीके के judgments आ रहे हैं that are sort of giving people the impression that you can get away with something as heinous as murder. So it actually calls for reforms of the judiciary in my personal opinion. और इसमें हदीजा की बात बिल्कुल सही है कि लीगल फील्ड में, जुडिशल फील्ड में फीमेल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, बट इवन दी एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन जो इस वक्त है जुडिशरी में, माय पर्सनल recommendation would be कि sensitization होनी बहुत ज़रूरी है. It could even be in terms of trainings, it could be in terms of educating the judges themselves जिनको खुद कानून interpret करना नहीं आ रहा, उनको judgments properly draft करने नहीं आ रहे, जो language है judgments की it is absolutely ludicrous कि दूसरा इंसान देख के या पढ़ के उसको हंसे, sorry to say. तो इन सारी चीज़ों में reforms की बहुत शदीद ज़रूरत है. बस मैं यही चीज़ एक ऐड करना चाह रही थी. बाकी ये कि थैंक यू सो मच हानिया, एंड अगेन इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू खतीजा. थैंक यू सो मच, लाइकवाइज सना. Thank you very much, Barrister Sana and Barrister Khadija. It was a very enlightening conversation, not just for me, but I'm sure for all our audience who have tuned in and will eventually once we post a recording. Indeed, you rightly mentioned that the entire nation looks up to the judiciary, and especially when it comes to a crime, a case that shakes and shocks women across borders, then we most certainly are looking for judgments that will be more victim-centric. Reform is essential, reform is crucial, especially at this stage, and reform it has to come from the legislature, it has to come in and from within the judiciary as well, because the judiciary itself has to sensitize itself, and obviously there should be trainings for it, proper modules. That brings me towards the end of the session, and we are looking forward to the Supreme Court and the approach that the Supreme Court would take towards this case. And a lot of women
from all across the country are looking for a positive outcome, and we wish Barrister Khatija and her team the very best of luck in the upcoming hearings, and I'm sure there will inshallah be a positive outcome in not just Qandeel's favor, but in favor of the women of the country, because essentially it is all of us who are involved, who are being impacted by this. Thank you so much, Barrister Sana and Barrister Khatija, for your time, and that brings me towards the end of the session. Thank you. Thank you. Okay, Sana, it was lovely having you.